Hi viewers, this is another inquiry of a mail express superfast train derailed in block section, and the inquiry was given to Commissioner of Railway Safety for a thorough and a neutral inquiry. However, the preliminary report has been published, and let's see what are the facts which have been discussed in the report, either forcibly and pointing out everything towards a particular department, while the discussion on the rolling stock, according to the joint measurements which reveal most of the defects lying at rejectable limits, have not been discussed in the preliminary inquiry report. Let us see how the inquiry has been done, reported upon, and what facts have been not discussed, or rather, in other words, with apology, have been ignored. I have tried to just sum up in this video. So this is the visuals of the accident. The picture has been taken from the print media, which has been published in many of the leading newspapers and many other Facebooks and YouTube, etc. So this is the train of which 11 coaches had derailed, and the train is Bangalore Kamakhya Express, and there have been one casualty, 7 injured after this train met an accident, so somewhere in Cuttack division. And now let's see what inputs are there as far as the inquiry report is concerned, and we'll discuss the preliminary findings what have been published by the commission. So this is the provisional finding as listed on page 17 of the report, which says, having carefully considered all evidences, the derailment occurred due to error in train working, failure to comply with the provision of para 345 and annexure 3 by 10 of IRPWM regarding regulation of track maintenance activities and minimum level of supervision. अब ये क्या है बता? ये है para 3 by 10. In fact, gang was doing its normal maintenance, जो हम normally on daily basis पे gang को we just depute them to a particular location कि जाओ भाई वहाँ कर लेना. And on that day it was TRC run. Possibly ये है ब्रिज अप्रोच है, थोड़ा कहीं भी कुछ होगा तो देख लेना. TRC का रिजल्ट थोड़ा अच्छा आना चाहिए. Everybody makes an effort to get a good result. So it was just a very normal working of the gang. But now dragging it to this para of annexure 3 by 10, 344, 50, 45 जो बताया गया है, mechanized stamping, lifting, general lift, alignment, minor alignment of curves, deep screening, then we require JE. Then we require JE PWA.
अदरवाइज फॉर नॉर्मल मैनुअल पैकिंग अलाइनमेंट जो छोटा मोटा रहता है, क्रॉस लेवल करेक्शन रहता है, या सम फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल डिप टू बी करेक्टेड, सो गैंगमेट इज सफिशिएंट। अननेसेसरली इसको जबरदस्ती बोलना कि मैं कह रहा हूं तो ये लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक हो रहा था और पैरा 344 में उसको ले जा रहे हैं, दिस इज समथिंग forcefulness, not a clear thing. क्योंकि if we go point by point, whatever has been mentioned in the report, which subsequently I will show, it's not that case. तो इसमें ऐसी भी कोई मतलब वजह नहीं है. We'll only go and pinpoint towards track because we have a background of civil engineering. It's not even that case. Instructions are very clear to deal with the derailments and what are the factors to be taken into consideration as regards the track, as regards the enginemanship, train operation. These are all factors which are required to be dealt in before coming to a conclusion. So this is the accident performer B4 कोच जो कि लोगों से गिरा है, और ये जो है 28/6 को 2023 में इसकी POH हो रखी है, एंड ये LWACCN इसकी टाइप है. आगे चल के इसी कोच का नेक्स्ट हम देखें अगर, तो इसमें अपने को मिलेगा, दिस इज द 7th कोच इन फैक्ट फ्रॉम लोकोमोटिव B4, एंड इसका ये जो पैरामीटर रिकॉर्ड हुए हैं जॉइंटली ऑन द सेम ट्रॉली, there is a difference of 6 millimeter in the wheel diameter. Permitted is maximum 5. अब इनका ये कहना हमेशा की तरह रहेगा कि हमारी इन सर्विस में व्हील डायामीटर की कोई लिमिट नहीं रहती, मतलब कितना भी लगा लो उससे गाड़ी नहीं गिरती. हाउ मेनी डू यू एग्री विद मी? ऑन द सेम एक्सल आपने बहुत से स्टील ग्लास देखे होंगे, नीचे से पतले होते हैं ऊपर से चौड़े होते हैं, उसको लेटा करके रोल करो तो एक साइड को घूमेगा. सेम इज द केस हियर. लेकिन इनके मोस्ट रिस्पेक्टेड मैनुअल यही कहते हैं कि हमारी इन सर्विस में कोई लिमिट नहीं होती, जितना मर्जी चक्का आगे पीछे डिफरेंस हो जाए, कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता. जबरदस्ती है. नेक्स्ट मैं आपको और एक चीज इसमें महत्वपूर्ण दिखाना चाहता हूं. ये देखिएगा, इसका जो नेक्स्ट है एयर स्प्रिंग हाइट, ऊपर क्या लिखा है? नो लीकेज फाउंड, एयर स्प्रिंग हाइट. व्यूअर्स, दिस इज 304, 315, 297, 314. कहां से आई? जब आपकी लीकेज ही नहीं है, अब हवा भरो चाहे ना भरो, 304 कहां से आई? 314 कहां से आई? 315 कहां से आई? The maximum is para 2 4.1.5.2.10. 292 is the maximum, plus 0 minus 5 मतलब 287. So this is the height. On one side they are agreeing there is no leakage, और इतनी जबरदस्त हाइट, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, ये तो रही एक चीज. अब आपको मैं दूसरी चीज दिखाता हूं.
यहाँ ये वाइड एंड एक्सेल 12.2 ऑफ मेंटेनेंस मैनुअल, ये जो हाइट होती है ना, दिस इज 930 + 6 -2 mm, मतलब 928 से 936, और ये कितनी आ रही है, इन दी रेंज ऑफ 77, मतलब उसका जो बोल्स्टर प्लेट जो है ना, बेस प्लेट, वो नीचे बैठी हुई है, दबी हुई है. सो दिस इज अब्रप्ट सिचुएशन ऑफ अ टिपिकल सस्पेंशन सिस्टम. These are nowhere mentioned in the report. This is the seventh coach. I am just discussing various parameters. Just see, I have, so to say, good experience in measurements of ICF, and LHB is a bit complicated one, but then my experience is nowadays it is carrying more defects than ICF. More defects than ICF. I have come across many accidents post superannuation, and see, nowhere it is mentioned that the heights are to be taken with pressure or no pressure. अगर आपको pressure नहीं है तो we do have non-return valves. Where will the pressure go? So all these things have not found its due place in the inquiry report. There is no mention. Let me proceed further with this coach measurements again. And this is the same coach I am continuing here, the seventh coach. And now ये गुड लिख दिया यहाँ में, क्लियरेंस बिटवीन ट्रैक्शन सेंटर एंड लॉन्गिट्यूडनल लेटरल पंप स्टॉप फॉर LHB. गुड क्या होता है? It has to be measured. It has to be measured, and it is as per column 46, which mandates measurements to be taken and the clearance has to be recorded. Now come on to brake pad gap. ठीक, इसमें दोनों गैप मिला करके होना चाहिए 1.5 mm, 1 to 1.5 mm. यहाँ दोनों का देख लीजिए, 4, ये 2.5 और 1.5 कितना हो गया आपका, 4, फिर इधर में देखिए 5.5, इधर में 3, इधर में 2.5, इधर में 6. ब्रेक कहाँ से लगेगी? अब कहते हैं कि हमने तो इशू कर दिया जी, उसके गैप का कोई इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, देयर इज वन करेक्शन स्लिप. कहाँ अमेंडमेंट इशू किया एक्सीडेंट परफॉर्मेंस में? वेयर इज द अमेंडमेंट इशूड? So condition of brake gear assembly, if I say this is not okay, I won't be wrong. And whatever I discussed few moments before, that the spring height was more. Now what is its effect is, now just see, the buffer height with air pressure comes to 1142. Without air pressure they say it is 1072. So anything 1090 से कम नहीं होती है normally in coaches में when they are in empty condition. And 1101 तो तभी है. तो ये मतलब clearly indicate करता है कि when this wagon was POH'd, overhauled, scheduled or inspected, nobody have checked these parameters. And with air pressure, normally जब गाड़ी चलती है तो एयर प्रेशर तो रहता है ना, pipes are connected, loco is connected. So this is having abnormally high buffer height. 1105 से empty stock में नहीं होना चाहिए. On standard height is 1190 under tear, at which the leveling valve is set in case of air suspension system. तो 1142 आ रही है. How does it work? How does it
gets a certification of attachment to the rake with the rejectable limit. Just see, everything has been on the record. Well, friends, if I summarize all these things of this B4 coach or the seventh coach, which is the first derailed from locomotive. Now, just see wheel diameter differences of up to 6 millimeter on the same bogie against the permitted 5 millimeter, excessive air spring height of 314 mm versus maximum permissible of 292, indicating incorrect leveling valve adjustment. The buffer height is 1142 against prescribed 1105. Bogie bolster plate height severely below standard. It's in the range of 70, 77, 82, required is 930, demonstrating totally failed air suspension system with no proper setting of the arrangement. Lateral bump stop clearances which were reported to be good. If you remember, I had pointed out it is never good, it is always measurable, and it has a limit of 25 plus 5 minus 2, that is 23 millimeter to 30 millimeter, and it was found to be 53, 58. Now, the difference between ICF and LHB coaches is that LHB do not have a center pivot, right? So it's the center traction only, and the lateral and longitudinal clearances which make its stability while negotiating curves, etc., and also in the traction. So that's why it is known as traction center for pulling, pushing, and all that. These clearances are abnormal, almost more than the double, and same is the result with the longitudinal clearances of center traction against 13 to 6 millimeter. It has been found somewhere 16, somewhere 17, somewhere 18. One Malika. And the disc brake shoe gap I had already shown, it's exceeding permissible limits. Till they say they have issued a correction slip, but no amendment has been issued up till now to the accident performance yet. Now coming over to the eighth coach, which is the second derailed one. So this is again date of commissioning is February 23 at its base, and let us see how the other measurements are on this coach as well as compared to the previous one. So this is also somewhat the readings what we have taken, and these are just what we have recorded jointly. Here also, now after pressure, after pressure, L1 is 264, R1 is 279. यहाँ क्या बोला है? लीकेज फाउंड, और इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है. तो भैया सच क्या है? जिसको आप लीकी बोल रहे हो उसकी हाइट दूसरों से ज़्यादा है आफ्टर गिविंग एयर प्रेशर, तो उसको आप लीकी कह रहे हो तो हमें मानना पड़ेगा. बट द फैक्ट इज द सस्पेंशन सिस्टम इज टोटली आउट ऑफ टॉलरेंस. अब यहाँ आ जाए तो यहाँ भी एक ही हाल है. दिस डिफरेंस विच इज रिक्वायर्ड टू बी 930 mean value
यहाँ लिखते हैं measured without air फ्लेशन। तो भाई हवा भर लो ना, यहाँ हवा भरी है तो उस टाइम इसका भी मेजरमेंट ले लो, कौन मना किया। तो इट इज़ 790, मतलब 40-50 mm ये कम है, तो हवा भरने से इतना थोड़ी आएगा। So this is also abnormally varying with the standard heights. And here, despite giving air pressure, if we leave this spring as a leaky, which is having the highest value of height, तो आपकी तो 260 से ऊपर जा ही नहीं रही है, 270, 260, मिनिमम रिक्वायर्ड इज 285, तो ये 20-25 mm वैसे कम आ रही है। क्या है ये? आगे वो जो परफॉर्मा में पैरामीटर्स लिए हैं, सेम इज द कंडीशन विद दिस ब्रेक शू की क्लियरेंसेस। अब यहाँ भी देखिए, इसकी जो सेंटर की लॉन्गिट्यूडनल लेटरल पंप स्टॉप की कंडीशन है, गुड लिख के छोड़ दी। इट हैज़ नॉट बीन मेजर्ड, बट दो सब्सिक्वेंटली इट वाज मेजर्ड एंड इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ टॉलरेंस। इट्स डबल। आई हैव द सेम थिंग रिकॉर्डेड इन द summary sheet of this 8th coach as well. This is the reading of 8th coach. So the next reading is now let me summarize whatever defects we had found, or whatever parameters which lie outside the permissible range. Let me summarize here. So this is B5 coach and it's 8th from loco and 2nd derailed from the locomotive. Now see, the air spring's height is significantly below than the specified height. Suspension system almost rejectable. Bogie bolster base plate height again against 930 is 140 mm less than what is required. Buffer heights again out of range, is no match, no synchronism between the suspension system and the related parameters, because the buffer height is directly related to the suspension system. Bump stop clearance is both lateral and longitudinal are double than what is specified, and this is how we have these parameters totally running out of the clearances. Now again let's move on to the 9th coach. Now 9th coach, again this is commissioned somewhere in 2022, and now if we go on to the various parameters of the 9th coach, then these are what is listed over here. And the difference, see, in the wheel diameter on the same coach has already reached 12.5 millimeter. So this is a critical parameter, although it's 13 mm, but then reaching 12.5 mm and it's in service. So I am just listing out what we have recorded jointly. Moving on to the next parameters, let us see what we have there. Again, same thing. These clearances and deflected height of coil springs. It's really a horrible state of affairs. When it is mentioned in the accident performer, nobody is ready to give it. They are hiding it. And this is straightway, reflected with the buffer height, with the air spring, with the height of bogie bolster base plate coming out like this way. This straightway points out to defective suspension system.
Nobody bothers to take all these measurements, and rather, I'm sorry to say, the readings which are taken, even Commission took a negative view about it. If this be the system of inquiring, God knows what will be the outcome of this inquiry report. So deflected height is not taken. We have taken, but then it is given the gap between the top and bottom plate is not the deflected height, and according to that, all fall under rejection. Horrible state of affairs. Again, this height, this is out of tolerance. It's 930 minus 2 plus 5, or minus 2 plus 6, sorry. Where do we stand? We are going far away from the train dynamics. Let's see next. Same thing. Now here, just see this parameter. The buffer height, they say without air pressure is 1067 and 1090. So this difference without air pressure itself amounts to some 23 millimeter. Front and rear. And here if they give the air pressure, then again there is a difference of 34 millimeter. That means there is up and down. One side is higher, one side is lower. Now, ninth coach derailed from locomotive. This is B6 coach. No air spring data recorded. Bogie bolster base plate height is again below standard. Buffer height difference 34 mm under pressure, indicating ineffective suspension response. Bump stop clearance is significantly over the limits. Incorrect primary spring deflection test performed. Correct data would likely show all springs fail. They don't pass the criteria. These deficiencies reflect grossly unstable suspension system across multiple coaches, likely to generate dynamic instability during high speed operations, yet these facts are entirely absent in the inquiry report. Now, what does the Commission say? Point by point rebuttal of CRS observation on track is alleged lifting and packing work. Now, one really wonders, जब हम नॉर्मल मेंटेनेंस कर रहे हैं, लिफ्टिंग कहां से आ गई? And normal maintenance is done by only and only gangmate under his supervision, not by the PWI or the JE or the SSC. This misconception has been forced into the inquiry report. There is no evidence to elevate this to lifting work requiring JE, PWA oversight. जबरदस्ती ये पैराग्राफ ठोका गया है जो फैक्चुअली है नहीं. रिमूवल ऑफ फिटिंग एंड बैलास्ट. अब बताओ, जब नॉर्मल पैकिंग करनी है तो क्या कैसे करते हैं? स्लीपर को पैक करना है, रील सीट कितनी है? 210. तो 210 के नीचे तो उसका बॉटम ऑफ द स्लीपर आएगा. क्या बैलास्ट खोलेंगे नहीं हम? एक. 2 नंबर, साइड में एक भी जैक मिला उसका जिक्र नहीं है, सो लिफ्टिंग तो हुई नहीं.
अब वो जो फिटिंग खुली बोलते हैं वो आफ्टर ड्रिलमेंट है। अब वो हिटिंग से खुली है या क्या हुई है, कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ऐसे लिफ्टिंग में मेट लोग क्या करते हैं, इंसर्ट में एक रॉड डाल करके देन दे लिफ्ट द रेल, रेल को ऐसे लिफ्ट करते हैं जस्ट टू इंड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉस लेवल करेक्शन लिफ्ट which is maybe 5 mm, 6 mm, 7 mm, that doesn't cause any sort of lifting so serious to derail a train or get the alignment out। बड़ी गलत ये इंटरप्रिटेशन की गई है इस आइटम की, कि फिटिंग निकाल दी, बैलास्ट निकाल दी। कितनी क्वांटिटी की बैलास्ट निकाली, कितने स्लीपर ओपन किए थे, और बड़ा स्पेक्युलेटिव जो कंक्लूजन है दैट हैज बीन ड्रॉन इन द रिपोर्ट। मतलब वी नो व्हाट इज थ्रू पैकिंग, व्हाट इज पैकिंग ऑफ स्लैक पैकिंग, सो हमें पता बैलास्ट खोलते इसलिए हमने लिख दिया बैलास्ट खोल दिया और फिटिंग खोल दी थी। अरे पागल है क्या कोई? सी नेक्स्ट, temperature concern. De-stressing temperature TD was 41 with the threshold TD plus 10 is 51. Local reading shows the temperature below this. No evidence to support the claim of excessive thermal stress। क्या क्या प्रूफ है? जो मेट के पास है थर्मामीटर वो तो नहीं बता रहा था। PWI ऑफिस का रिकॉर्ड विच इज अ बिट अवे, देयर कैन बी टेम्परेचर डिफरेंस 1 2 3 4 डिग्री हार्डली मैटर्स। उतना तो टेम्परेचर अलग अलग थर्मोमीटर में भी कैलिब्रेशन की फर्क हो जाती है 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड की। अगेन वही चीज, क्योंकि हमें पीवे के बारे में पता है, सो वी कैन ऐड ऑल द एडिटिव्स ऑफ पीवे जस्ट टू प्रूव पीवे गलत है। रियलिटी कुछ और है। अब है अनड्यूलेशन ऑब्जर्वेशन। अब देखिए लोकोमोटिव में CLI होगा, हमने अनड्यूलेशन देखी हो। पाजी अनड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या, पहले ये बता। अनड्यूलेशन किस तरफ, क्या है अनड्यूलेशन से, व्हाट डू यू मीन बाय अनड्यूलेशन? इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड। अनड्यूलेशन क्या है इसकी डेफिनेशन भाई? जो मिस्त्री वहां खड़ा है, वो गैंग वहां खड़ा है, एवरी इक्विपमेंट वहां खड़ा है, TRC गई है, 2-3 ट्रेन गई है, पैरेलल दूसरे ट्रैक पे गाड़ियां गई हैं, नोबडी कुड ऑब्जर्व एनी अनड्यूलेशन। ये CLI दूर से 300-400-500 मीटर से इसको अनड्यूलेशन दिखाई दे दी, झक से ब्रेक मार दी। व्हाट इज द पैरामीटर, व्हाट इज द क्वांटिफाइड डाटा? इट कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड कैजुअली। These are all imagination without any evidence। Ballast fastening deficiencies क्या रिकॉर्ड है? कितने स्लीपर खोल लेते, किसी ने काउंट किए? LWR में काम करने के लिए वी ओपन आउट स्लीपर्स। अब एक साइड की बैलास्ट खोली थी फॉर क्रॉस लेवल करेक्शन, या दोनों साइड की खोली थी, और कितने स्लीपर खोले थे, क्या रिकॉर्ड है? देयर इज नथिंग लाइक साइट स्पेसिफिक फाइंडिंग, कुछ नहीं। जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, बैलास्ट डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी, वो डेफिशिएंसी, कोई पैरामीटर नहीं है। कितने स्लीपर ओपन किए, कितने खोले, कितनी बैलास्ट खोली, एक साइड के ट्रैक खोला, 2 साइड का ट्रैक खोला, नथिंग। ट्रैक ट्विस्ट ड्यू टू लेटरल व्हील फोर्स। अब भगवान ही मालिक है, क्या क्या अंग्रेजी उसमें लिखी हुई है। लेटरल व्हील फोर्स से ट्रैक ट्विस्ट डिफरेंट चीज है, टेक्निकली फ्लॉड है ये। रेल ट्विस्ट अंडर लेटरल फोर्सेस विदाउट अफेक्टिंग स्लीपर्स और एडजेसेंट रेल कॉन्ट्राडिक्ट्स रेल व्हील मैकेनिक्स।
वीडियो शोज ए शार्प ड्रॉप इन बीपी प्रेशर, इतने बजे से इतने बजे। तो ब्रेक क्यों मारी उसने? जब हमने उनसे WSP का रिकॉर्ड मांगा कि उसका ग्राफ दीजिए, कौन सा व्हील पहले गिरा, वी विल सी, नो हियरिंग। मेरे को RTI रिप्लाई में दिया, आप क्या मांग रहे हैं हमें नहीं पता है। WSP का जो चारों चक्कों का, चारों एक्सल का जो रिकॉर्ड होता है स्पीड वाला, उसका ग्राफ मांगा गया है और उनको समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज RTI रिप्लाई दे आर गिविंग, दे टोटली वांट टू डिनाई। उससे WSP से पहली चीज तो इनका टाइमिंग ही नहीं मिलता कभी, दैट इज नेवर कैलिब्रेटेड एंड हार्डली कैलिब्रेटेड। ये WSP वाले रिकॉर्ड मैंने 2 देखे हैं, एक गोंडा एक्सप्रेस में, एक इसमें। आज तक पता नहीं कमीशन ने क्यों नहीं वो मांगा। वहां से पता चलता है विच व्हील डिरेल्ड फर्स्ट और किस कोच का। आपको टाइमिंग लैग कितना है वो भी हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद से हमको पता चलेगा कि एट व्हाट टाइम विच व्हील हैड डिरेल्ड फर्स्ट ऑफ विच कोच। ये अंदाजा नहीं है, मतलब गैंग मिल गया, CLA ने एडुलेशन बोल दिया और हमने बोल दिया ट्रैक में ट्विस्ट आ गई, ये आ गया, उठ गया, नीचे बैठ गया, साइड को चला गया, इधर चला गया, कुछ नहीं है, नथिंग। अब ये ब्रेकिंग डायनेमिक्स से ही तो आपका ट्रैक टेढ़ा बेता होता है। वाई? आगे से फोर्स लगेगी, पीछे से ट्रेलिंग मोमेंटम आएगा आपका, और एक कंप्रेशन जोन क्रिएट होगी, बाहर को निकलेगी। द एनर्जी सो क्रिएटेड हैज टू डिसिपेट समवेयर एंड इट डिसिपेट्स लिटरली बिकॉज इट वाज ए कर्व। और फ्लेंज फोर्स नाम की कोई एक चिड़िया होती है, एंड द फ्लेंज इज 28 to 32 मिलीमीटर डीप। वो क्या लेटरल एक्सर्ट नहीं करेगा फोर्स, रीलों को नहीं फेंकेगा बाहर की तरफ। Why these factors are not considered? और zigzag गाड़ियां जब आपकी लाई करती हैं on the track after derailment, that indicates what sort of braking the loco pilot has applied. Now this is letter from Ministry of Railways, और यहां में पैरा 6 में बड़ा 7 में क्लियरली लिखा रहता है, ये perform of measurement of locomotive, wagon and carriage are attached in axle so and so. The joint measurements to be submitted by senior supervisor shall not be complete till all measurements of rolling stock and track has been enclosed in the proforma. आप ट्रैक की रीडिंग तो साथ साथ खड़े होकर के लेकर के खत्म कर लेते हो, और रोलिंग स्टॉक की मेजरमेंट के लिए कटोरा लेके पीछे पीछे घूमते रहो। अब क्या पॉइंट रेज होता है, ये तो किसी दूसरी रेलवे का रोलिंग स्टॉक है, वो जब तक नहीं आएंगे तब तक आप रीडिंग नहीं ले सकते। तो भाई फिर उनके लिए वेट करो ना, ट्रैक रीडिंग भी वो आएंगे तब हम लेंगे। फिर ये ट्रैक वाले क्यों लेते हैं हमारी रीडिंग? जब रेक आपका नहीं है, ट्रैक आपका है, तो वो भी कहेंगे ना कि आपने ट्रैक बचाया है, हमको नहीं दिखाया। तो जब तक वो नहीं आते तब तक फिर हमको ट्रैक मेजरमेंट पे तो नहीं लेना चाहिए। वो भी जिनका रहेगा वो आके लें। और एडिशनल मेजरमेंट के लिए देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यहां क्लियर लिखा हुआ पैरा 7 में, इंक्वायरी कमेटी में गेट एडिशनल मेजरमेंट्स डन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रिलमेंट। ये बोर्ड की अपनी इंस्ट्रक्शन है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन व्यूअर्स, कमीशन इज अ independent body, not a autonomous. It works within the rule frame of the railway ministry, उससे बाहर तो है नहीं। इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर दी गई है, हम फॉलो नहीं करते। नाउ IRPWM पैरा 527 की तो जड़ से उखाड़ के मार दिया। आपने इंक्वायरी रिपोर्ट ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपको 4-5 ट्रैक की आइटम मिली, उसमें सारी मैनुअल के हिसाब से घुसेड़ दी, वहां में कट कॉपी पेस्ट।
क्या है जी, लिफ्टिंग हो रही थी, क्या प्रूफ है? कोई जैक नहीं साइड में, कुछ नहीं है। कितना ट्रैक खोला था उसका कोई भी आपका डाटा नहीं है, क्वांटिटी कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है। एक साइड का ट्रैक खोला उसने, दोनों साइड का खोला ना, कंटिन्यूस कितना खोला है। बैलास्ट रिमूव किया है तो पैकिंग बिना बैलास्ट के मैन्युअली रिमूव नहीं करेंगे तो हाउ वन कैन डू द पैकिंग, टेल मी। सबसे आसान तरीका इंक्वायरी निपटाने का होता है मैनुअल छाप दो। आपको जेई ऐसी लगाना है, आपने मेड लगाया, ये लगाया, अरे वर्क तो देखो पहले क्या हो रहा है। नाउ व्हाई द इंक्वायरी इज वॉइड ऑफ एंड शाइंग ऑफ डिस्कसिंग the rejectable parameters which have been found as per the joint recorded measurements of the rolling stock। हम किसको खुश कर रहे हैं? If these types of reports are there, nobody can expect fair outcome of the inquiry. Now, whatever we have seen, I leave it to my viewers to conclude for themselves. But what I personally feel is that the accident inquiries done by Commissioner of Railway Safety in case of serious accidents or by departmental officials in case of other accidents are separately dealt by various acts, rules and guidelines issued by the Ministry of Railways from time to time. So it has to be within the framework of prescribed rules according to the instructions issued from time to time, and not merely one-sided. But cannot be very open on this forum to say why nowadays things are like that one-sidedly, but then जिनको समझना है समझ गए। प्रॉपर इंक्वायरी होने से सबको अच्छा लगता है, और जब कोई चीज़ें देखने के बावजूद भी ओमिट हो जाए थोड़ा सा दुख लगता है। और हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारी इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी में अभी तक जो रोलिंग स्टॉक का एक्सपोजर है काफ़ी कम है। अभी भी मैं जब भी कभी कोई आता है रेफरेंस किसी केस का, जब मैं पूछता हूँ कि यार चलो इसका ये पैरामीटर नाप लो, इसको थोड़ा एक बार चेक कर लो, तो आई एम सरप्राइज्ड कि जानकारी का वो लेवल जो चाहिए वो कम मिलता है देखने को। सो वी शुड फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स, एंड आई बेट यू द डिफेक्ट्स आर more on the rolling stock than track, provided one knows where to catch up. Most of the time I am helping my members, friends, juniors, seniors through video call, because now movement is a bit difficult for me. But even then a VC is sufficient. So those who need any time, any sort of a help, what I can provide, I always stand by you 24/7. And until and unless we put our points strongly based on the provisions of the manuals of the codes, we need not fear. Well, I thank you for watching this video. I would like you to comment your likings, your dislikings about what I have mentioned. And this is again, I firmly say that this is only for the purpose of showing our people
how and what to measure, how to counter, how to correlate, and all these things. It's nowhere to damage anybody's reputation, personal, individual, organizational. This is all what I pass off my time by sharing what I come across. So if you like it, please give me a thumbs up. If you like it, do encourage me by sharing my videos to your colleagues, seniors, juniors, and those who haven't subscribed, please do subscribe. This channel is meant for you only, and for me, I have nothing to gain or lose, but then if watching these, if somebody learns something, it's my credit, my pleasure. Thank you once again, and keep watching. Stay blessed.